चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स उसका टॉपिक कवर करेंगे पॉलिनेशन। तो पहले हम डिटेल में रिवाइज करेंगे, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। Pollination. Pollination is a free fertilization event. In this, transfer of pollen grain, जो male gamete होता है, transfer to the stigma of a flower. Male gamete and a female gamete are immotile. Then types of pollinations, self pollination के अंदर आएगा autogamy, cross pollination के अंदर आएगा geitonogamy and xenogamy. सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर आएगा ऑटोगैमी, उसको हम डिटेल में कवर करते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू स्टिग्मा ऑफ अ सेम फ्लावर। ओके, देन दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन पॉलिनेटर्स, दे आर नॉट ब्यूटिफुली कलर्ड एंड विदाउट फ्रेग्रेंस, दे शो मोर homozygosity and less variation due to inbreeding. Example: Chasmogamous flower, open flower show both autogamy and cross-pollination. B. Clistogamous जो closed flower show always autogamy. Examples: Commelina, oxalis, viola. Tricks to be remember: COVID, C. Commelina, O. oxalis, V. viola. Okay. Then cross-pollination. First, geitonogamy, when pollen grains of one flower land on the stigma of a different flower of same plant. They are functionally similar to cross-pollination. The flower can be unisexual or a bisexual. Sorry, they show no variation. Okay, इसे correct कर लेना. Then xenogamy, transfer of pollen grain to a stigma of another flower of another plant of same species. Flowers are bisexual or unisexual. They show variations. They require pollinating agents. Example: papaya, dates, etc. Now, agent of pollinations: abiotic जो नॉन लिविंग होते हैं एंड बायोटिक जो लिविंग होते हैं, इंसेक्ट्स, बर्ड, एंड्स, बैट एक्सेट्रा. विंड पॉलिनेशन, जिसे हम कहते हैं एनिमोफिली. पॉलन ग्रेन्स लाइट वेट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, वेल एक्सपोज स्टेमिन होता है, ह्यूज क्वांटिटी में होते हैं. स्टिग्मा फेदरी टू ट्रैप पॉलन. Flowers not beautifully colored, no nectar, no fragrance. Flower packed into inflorescence of a single ovule. Example: maize, grasses, etc. Grasses are more common. Water pollination. Hydrophilis, stamen, mucilaginous covering होती है, ribbon like long होते हैं, which float passively in water. Stigma. Stigma elongate to reach the surface of water. पानी के ऊपर होता है. Pollen passively float in water to reach the stigma. Pollinations occur on surface of water. जैसे कि वेलिसिनेरिया एंड हाइड्रीला फ्रेश वाटर होता है. वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली के अंदर किससे पॉलिनेशन होता है? बाय विंड एंड इंसेक्ट से. वो भले वाटर के हैं पर वाटर से नहीं करते, उसके अंदर विंड और इंसेक्ट करते हैं. एग्जाम्पल वाटर पॉलिनेशन के हाइड्रीला, वेलिसिनेरिया, जोस्ट्रेरा, टेरिडोफाइट्स एक्सेट्रा. इंसेक्ट पॉलिनेशन, जिसे हम एंटीमोफिली भी कहते हैं. स्टेमिन, पॉलेंस आर स्टिकी, स्टिग्मा वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए, फ्लावर ब्यूटीफुली कलर्ड होने चाहिए, फ्रेग्रेंस आनी चाहिए, ऑर्डर्स जैसे कि बीटल्स, फ्लाइज, नेक्टर की फॉर्म में हमें उन्हें रिवॉर्ड मिलता है. अब हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, नीट के PYQs. Question 1. Transfer of pollen grain from the anther to the stigma of another flower of the same plant is called A. Autogamy, B. Geitonogamy, C. Xenogamy, D. Cleistogamy. The answer is
B. Chitinogamy. Question number 2. Which of the following is not a characteristic feature of wind pollinated flower? Pollen grain are light and non-sticky. B. Stamens are large and feathery. C. Flowers often have a single ovule in each ovary. D. Flowers produce abundant nectar and pleasant fragrance. The answer is G. Okay, next. Question number 3. Large, colorful, fragrant flowers with nectar are seen in insect pollinated plant, birds pollinated plant, bat pollinated plant, wind pollinated plant. The answer is A. Insect pollinated plants. Next, what is the function of tassels in the corn cob? To attract insects, to trap pollen grains, to disperse pollen grains, to protect seeds. The answer is to trap pollen grains. In water hyacinth and water lily, pollinated take place by water current only, wind and water, insects and water, insects or wind. The answer is insects or wind, option number D. Question number 6. In which one of the following both autogamy and xenogamy are prevented? Maize, wheat, papaya, castor. The answer is C. Papaya. Rewards. Question number 7. Rewards are required for entomophily, hydrophily, cleistogamy, anemophily. The answer is option number A. Entomophily. Question number 8. Which one of the following statement is correct? Zygonogamy involves the pollen and stigma of flower of different plants. Clistogamous flowers are always autogamous. Xenogamy occurs only by wind pollination. Chasmogamous flowers do not open at all. The answer is correct पूछा है. The answer is D. Clistogamous flowers are always autogamous. Question number 9. Which of the following pairs of plants are well known example of water pollinated angiosperms? Vallisneria and Hydrilla, Zostera and Maize, Cannabis and Vallisneria, wheat and rice. The answer is A. Vallisneria and Hydrilla. Question number 10. The transfer of pollen grain from the anther to stigma of a genetically different plant, different variety या फिर species is known as autogamy, heteronogamy, xenogamy, cleistogamy. The answer is C. Different पूछा है. Okay? ये रही आंसर की एंड थैंक यू. अगर आपको और कोई टॉपिक चाहिए तो प्लीज़ डू लाइक मी इन द कमेंट सेक्शन. ओके बाय. थैंक यू.